Hello class 5th, you all are warm welcome in your EVS class. Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study chapter number 9, food preservation. Hope you all have revised your previous chapter. Food preservation. बच्चों अब फूड को कैसे प्रिजर्व रखा जाए, फूड का बचाव कैसे किया जाए, खाने का बच्चों. The food which is left for a few days often get spoiled. बच्चों जो खाना लगातार कुछ दिन तक अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं तो वो सड़ जाता है. It changes its color, becomes smelly and tastes bad. उसका रंग बदल जाता है और बहुत बदबू आती है बच्चों सड़े हुए खाने से. अगर बच्चों ब्रेड को हम खुले में छोड़ देंगे तो उसमें बच्चों फफूंदी लग जाएगी. It develops some blackish green patches and it also starts to smell bad. Here we have let's do it. For how many days we can store bread? Bread को हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं बच्चों? क्या होगा अगर हम स्टिल सड़ा हुआ खाना, बासी खाना खाएंगे? हम बीमार पड़ जाएंगे. How does food get spoiled? फूड जो है वो कैसे खराब हो जाता है? It is very important to eat fresh food. फ्रेश फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरी है. Food should not be left open for days. When we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed. But if this cooked food is left laying around, it can again be attacked and spoiled by these germs. Bacteria and fungi ये एयर में प्रेजेंट रहते हैं and they settle on the food. They grow multiple and they spoil the food producing substances that are harmful to our health. They grow multiple and spoil the food producing substances that are harmful to our health. Spoiled food smells terrible. बच्चों जो खाना बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें बहुत बेकार सी खुशबू आती है और टेस्टी भी नहीं लगता है. Eating spoiled food can cause diseases. कैसी बीमारियां बच्चों कॉज हो सकती है अगर हम ये सड़ा हुआ खाना खाएंगे? Dysentery, typhoid, cholera and even death. Spoiled food also causes food poisoning. और बच्चों फूड पॉइजनिंग किससे होती है? स्पॉइल्ड फूड से होती है. फूड पॉइजनिंग कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर. फंगी can cause discoloration, slime and odor in sweet, acidic refrigerator food or jams and jellies. बैक्टीरिया क्या है? ये एक अनदर ऑर्गेनिज्म है बच्चों दैट स्पॉइल मीट, मिल्क एंड क्रीम. All food items do not get spoiled, but baked food gets spoiled easily as it has water. जो बेक्ड फूड होता है बच्चों वो जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट रहता है. अनकुक्ड राइस, व्हीट, दाल एक्सेट्रा ये जो है वो स्पॉइल नहीं होते जल्दी बच्चों क्योंकि ये सूखे रहते हैं. आपको दो ऐसे फूड के बारे में बताना है जो बहुत आसानी से स्पॉइल्ड हो जाते हैं. एंड नेम 2 अनकुक्ड फूड दैट डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली. फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है बच्चों फॉर ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू अवॉइड स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया एंड फंगी और बैक्टीरिया द्वारा स्पॉइलेज ना हो बच्चों, इसलिए बहुत सारे मेथड है फूड प्रिजर्वेशन के लिए. दे नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू लिव. किसको बच्चों? फंगी और बैक्टीरिया को चाहिए. वी कैन प्रिजर्व फूड बाय फॉलोइंग वेज. Drying storage. Sugar, rice, wheat, nuts and pulses in a dry place do not get spoiled so easily and they are known as dry storage food. It is one of the oldest method of food preservation. This process prevents water from eating food and thus stop bacterial or fungal growth. Foods जैसे कि बच्चों पोटैटो है, पापड़ है, बनाना चिप्स हैं, ये they are laid dry out in the sun. Vegetable like स्पाइनेक, जिंजर, फेनुग्रीक लीव्स एक्सेट्रा ये प्रिजर्व होती हैं बच्चों बाय ड्राइंग. इनको सुखाकर रखा जाता है. कोल्ड स्टोरेज बच्चों जैसे कि हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज में हम कोई भी चीज रखते हैं तो वो खराब नहीं होती है. स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम दैट गोज स्पॉइल इजली लाइक जैम, जेली, पिकल एंड कुक डिशेस इन कोल्ड प्लेस इज नोन एज कोल्ड स्टोरेज. The refrigerator is a cold storage. Bacteria cannot grow and multiply in cold conditions, but once the food is taken out of refrigerator, it must be eaten immediately as it can again get spoiled and make us sick. Heating and boiling. Bacteria and fungi cannot live in very high temperature. इसीलिए बच्चों हमें पानी हमेशा बॉयल करके पीना चाहिए और जब पका हुआ खाना होता है वो भी कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 घंटे तक सही सुरक्षित रहता है. Let's do it. Here questions are given to you. You have to write down its answer.
एडिंग वेनेगर सॉल्ट एंड शुगर। बच्चों जब हम खाने में वेनेगर सॉल्ट और शुगर डाल देते हैं उससे भी हमारा जो खाना है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहता है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम फूड एंड स्टॉप जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग। अदर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं बच्चों, वेनेगर है, शुगर है। पिकल्स आर मेड विद वेनेगर्स, पिकल्स को वेनेगर के द्वारा बनाया जाता है। ग्रीन चिलीज एंड क्यूकम्बर्स आर प्रिजर्व विद वेनेगर, सॉल्ट एंड शुगर। Jams and squashes are also preserved with the help of preservatives. Let us know more बच्चों. Meat and fish, it can both be preserved and flavored through the use of smoke. This is known as smoking. Then we have canning and packing. Germs are killed by heating the food stored in clean containers or can. Germs it cannot grow inside the clean can. Germs जो है बच्चों clean can के अंदर नहीं जा पाता है. Food stuff preserved by this process and can be kept outside the refrigerator as long as they are not open. Canning बच्चों प्रिजर्व करती है फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर. Food can also be preserved by packing them in polythene bags. Polythene bags do not allow air to go in and germs cannot grow without air. और हमें क्या करना चाहिए बच्चों? We should always check the expiry date. जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट पैकेट लेते हैं बच्चों, पैकेज जो पैकेट में बंद रहते हैं प्रोडक्ट जैसे मैगी है, कुरकुरे है, चिप्स है, हमें हमेशा उनकी एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए. Let us know more. All canned food have a shelf life. They should be used before their expiry date. Expiry date is mentioned at the back of every package's food. Then we have safe food. It usually happens that people serve more food on their plates than they need. ठीक है बच्चों, कभी कभी क्या होता है, लालच के चक्कर में हम ज्यादा से ज्यादा खाना अपनी प्लेट में परोस लेते हैं लेकिन हमें उतना खाना नहीं रहता है. रेस्ट ऑफ द फूड इज थ्रोन. सो दिस इज द वेस्टेज ऑफ फूड. इसीलिए बच्चों हमें कोशिश करनी चाहिए, वी मस्ट बाय एंड कुक ओनली एज मच as food as we can eat and preserve. We must buy only as many food items as we need. We should prevent the wastage of food. That's all about this chapter. Revise the chapter properly. Always eat healthy food and always preserve the food. Take care of yourself. We'll be seeing you in another EVS class. Bye-bye.